Nagaland University Day, Department of Environmental Science March 18 Day, Innovation and Entrepreneurship in Environmental Science for a Sustainable Future Bidode, 18 Nimide, Symposium Laga Ayujan Kurshe. Japan Laga Chief of Staff, Joint Staff General Yoshihide Yoshida Wednesday 10, India Japan Laga Rishtage, Darif Kuriche Aro Ahya Samite Rishtado Arobi Masput Kuble Wishwas Rakiche. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandra Babu Naidu Wednesday 10, Delhi Day Philanthropies Aro Microsoft Laga C co-founder Bill Gates ke Lokpaiche. Meerut ta Merchant Navy Officer ke Dailaga Maiki aro Maiki laga lover Jakubra Marikina Murai Disha aro Dailaga Kaudu Katikina Drum Bitor Cement Plaster Kuritiche Koikina Police Prajnaiche. Hello viewers, Master Enchimi Himjoy, Nltv Nltv Primetime Nagamese Swagat Kurese. Aibi Sawa Jilaga Khobor Khan. Nagaland University Day, Department of Environmental Science March 18 Day, Innovation and Entrepreneurship in Environmental Science for a Sustainable Future Bitode, 18 Nimide, Symposium Laga Ayuchan Kurshe. Itu even Laga Maksadu, students are professionals kange, sustainable business opportunities are environmental challenges kani, innovative solution explore kurble jibule kani. Symposium Laga inauguration do Chief Guest Professor J.K. Patnaik, Vice Chancellor Nagaland University Laga presence to Kurshe. Daibra innovations ke Bharawa Dubule students ke eco-friendly entrepreneurship opor encourage Kurshe. Technical session day Dr. Durba Joyti, Brodol, Dr. Akamtungshe, Longkumar Aro Fihatung Zileng entrepreneurship concept aro sustainable business model opor charcha Kurshe. Dusra session day Pendangwala Waling Garima Kapur Nanda aro Himanshu Tyaki eco-friendly ventures can share kushe. Symposium students can get local products logode eco-friendly business ideas ke explore kurble kushe. Punjab Police Tuesday din Tuida Waris Punjab Day Group member laga local court laga permission logina custody secure kuishi Dibrukar Central Jail Kober hisa Punjab Police detainees kan laga custody aro trainees remand apply kurule blend kurese. Sub legal procedures hoija bijile detainees kan ge Punjab Day wapas ahikina hi formally arrest aro case day involved agya laga trial face kurbo. Assam laga Batargandi Day public complaints bichide footpath day encroachment hatai dishe. Circle administration all of din age day ekta notice issue kushi kintu iko kam hwa nai kushe. Wednesday din CRPF forces red marishe tade ko Balin Baba Balir aro assistant go Adit Nunisia lead kushe. Taikan south to north rail ke tak footpath ke free kuri dishe. Local manukan itu katam bishe kushi paishe. Patarkandi Mini Town Day, Assam Tripura National Highway 8 Day, Dukandar Aro Kar Laga Malikan footpath occupy Kurigna Takishe Business Limited. Idu Mamlado DC Ko Aro Union Minister Krishnu Nandu Bal Bra Janai Bichide footpaths Laga encroachment ke free Kuritishe. Eviction nasile 152 BNSS 100 ami rastat kisuman encroachment asile not exactly encroachment bostu nijor dokano bostu thwa aru kiba illegal construction hebur asile aji ami he Army laga oporde awareness raise kurule aro young manukan ke armed forces day join kurubi koikina encourage kurule nimiji Assam Rifles laga team do motorcycle 4000 km travel kurishe kushe Daikan laga journey to Vijaynagar Arunachal Pradesh day March 10 shuru kurishe aro Tuesday din day Daikan do Danapur Bihar day jabule nimiji Daikan laga trip to continue kurishe kushe Daikan laga trip to March 24 day run of Kutch Gujarat day khotam hobo kushe Idu trip Surya Yatra du Colonel Jitain
Metabra lead Kuchi, Good Indian Army, Assam Rifles are Arunachal Pradesh laga locals kandi hisaluishe. Iru team kandu school Pajakhange lok pai asiaro, Baikange Armed Forces te join kurble karni motivate kuriase koikina janaidishe. हम टोटल 12 राइडर्स हैं। 12 राइडर्स में से 4 जो हैं असम राइफल्स के हैं, 4 आर्मी के हैं और 4 हमारे जो लोकल अरुणाचल के हमारे सिविलियन दोस्त हैं, भाई लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार से हम 12 राइडर्स जो है लेके चले एक मिशन को, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारी जो रैली है उसको बहुत अच्छी तरीके से ये फुलफिल भी करता है। हम कनेक्ट कर रहे हैं ईस्ट से वेस्ट को। साथ में हम लोग जब भी जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, जिस स्टेशन में भी हम रुक रहे हैं, जैसे आज हमारा 6ठा दिन है, हम लोग कल गए गांव में रुके थे अपने एक्स सर्विसमेंस और स्कूल बच्चों के साथ में, और आज हम लोग वाराणसी पहुंचेंगे। तो जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जो हमारे असम राइफल के जो हमारे एक्स सर्विसमेंस हैं, हम लोग रियली ऑनर्ड, हम लोग बहुत थैंकफुल हैं उनके, जो उन्होंने अपनी सर्विसेज, जो हमारे आर्मी वाले भाई लोगों ने जो अपनी सर्विसेज जो देश को दी हुई हैं, हम उसको ऑनर करते हैं और रास्ते में उनसे जो हम लोग मिलते हुए जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है एम है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम विजयनगर है, जो कि जो इंडिया और म्यांमार बॉर्डर का जो सबसे दूर का छोर है, वहाँ से हमारी बाइक रैली स्टार्ट हुई है। 10th को हम लोग स्टार्ट हुए हैं। और Parliament brought Tuesday din supplementary demands the rupees 51,463 crore current fiscal year or Manipur budget 2025 to 26 nimaje approved kuriship. Manipur budget the rupees 17,947 crore vote on account include as rupees 500 crore do contingency fund ase. Rajya Sabha bra charda bills Lok Sabha de wapas kuri dishe kuje. Appropriation bills rupees 5.54 lakh crore supplementary demands to debt repayment karni jabule tagishe. Manipur do ija president rule de asero parliament ra state governance to handle kuriase. First deal with the supplementary demand for Manipur, sir. This supplementary demand, sir, is for 1,861 crore, covers 20 demands and 1 appropriation. 948 crore rupees supplementary is being sought for revenue expenditure itself. These include, and very importantly, interest payment and debt services, additional requirement of pay and allowances, relief measures and security expenditure on account of law and order situation, and taking over the DISCOM losses for the state. So that is one heading, sir. 913 crores supplementary is being sought for capital expenditure also. We gave the revenue expenditure and the items under it. Now the capital expenditure. I'd like to say that for Manipur, we have already given the special assistance for state capital investment, which is a 50-year interest fee which all states get. But however, because of the disturbance and the administration being focused on that, last 2 years they hadn't claimed anything under the 50-year interest free. Manipur needed it. So 913 crores are being given under the special assistance for states capital investment. That is for 24-25, sir, the current running year. Other than this, Manipur as a state had never had contingency fund created for itself, which is very important, and most states create and have contingency fund arrangement because that helps them to meet with emergent situations. So we have created now a contingency fund for Manipur with 500 crores being given to them. So that is about the supplementary demand for 24-25 Manipur budget, sir. But the forthcoming year, 25-26 budget is also presented here. And I would like to remind honorable members, particularly member Sushmita Dev, because of a concern about Manipur and its requirement for funds, given the situation they are in, she had said, why are you not announcing a package? I would like to tell her, honorable member, through you, sir, that this is a vote on account budget for Manipur. We are presenting a vote on account for 6 months so that the government runs, its immediate emerging expenditure can be taken care of, and the government, when it comes into place, will obviously make provision for whatever they want, and that is the budget, which is the year-long budget. So this is a
budget vote on account for 6 months, and this is for 17,947 crores. The total receipts which are projected is 35,368 crores. Revenue receipts are estimated to be 27,231 crores. Sir, the state's own tax is 2,634 crore rupees as receipts, and non-tax is 400 crore respectively. So at this stage, sir, we are looking at giving all the assistance which I've committed. I said this in Lok Sabha, I'm repeating it here. We extend the fullest support from Ministry of Finance so that the recovery of Manipur will be sooner rather than later, and we have absolutely extended all assistance, and in the meanwhile making sure the public finance and the fiscal situation of Manipur is well assessed. Central government will be fully of support to the state. Meghalaya government Briny Hat industrial units laga urgent audit order krise air pollution karni. Meghalaya State Pollution Control Board units inspect riboro 7 team bidor report submit kuribi koise. Media reports para bishi high level pollution indicate kurise hulibi CM contract sangma bra koise ki MSPCB bra lower pollution dikhai ase koikna. Recent inspection bra violation reveal kurise June to bra closure aro kunuba industrial units penalties lead kurise. Briny Hat monitoring station day air quality data do bishi poor ase kuise. Assam aro Meghalaya bra pollution address kuribole nimiti step loy ase koikna janai dise. That all the records that have been shown in different newspaper clippings were records that were taken by the Assam monitoring station, which came out with the numbers and showed very poor AQI. Whereas the Meghalaya, when we looked at our stations and our equipments that we placed, in the month of January, the same period, 2025 January, our readings have shown that the areas, 3 locations in those areas where we have stations, showed satisfactory and moderate in the that all the Agartala border de lighthouse te takya flats to Nababra customers kanbra Juda office te protest kurble nimiti jaisha. Idu logot sob customers kanbra interview humoi Tripura Urban Planning aro Development Authority laga Joint Secretary logote lok paishe aro flats to kitia khotom hobo itu janibule nimiti. Customers kanbra complain gurishi ki dai kanbra 5 to 7 lakhs kimat 2021 de dishi itu flats kinibule holibi asti bra kam hoa karni customers kan unsure ase itu flats to kitia khotom hobo koikina. Idu mamla opor haradhan jundu bilonia laga customer ase dai bra koishe ki dai laga mati aro kordo Bikaigina rupees 5 lakh to flats limited deposit kurise kuise. Ita daikan takibule jaka nai kuise aro bishi kan rent e takia se kuise. Judi flats laga kam to khotom nohoile taibra poisa do interest logote wapas dibi koikina mang kuise. একটা সলিউশনে আসতে পারি প্রবলেম তো আছে কিন্তু এভরি প্রবলেম হ্যাজ সাম সলিউশন অবশ্যই কিন্তু এটা আমাদের মানে কালেক্টিভলি করতে হবে তো আমি যা জানা আছে আমার কোভিড তো ছিল তারপরে একটু জায়গাটা একটু ড্যাম ছিল অনেক মানে নিচে ইয়ে করতে হয়েছে এক্সট্রা অনেক কিছু মানে ইয়ে লেগেছে অ্যাকচুয়ালি হোয়াটএভার যে বাজেট ছিল বাজেট অ্যাকচুয়ালি একটু ক্রস করেছে ক্রস করার পরে তো তারপরে আবার তো টাকার ব্যাপার এসছে তো সেই ডেফিনেটলি একটা আর এই কনস্ট্রাকশন যে করছে এটা তো আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে করছি না এটা মানে কেন্দ্রীয় একটা মানে সংস্থা তো সেইখানে এখন অ্যাকচুয়ালি কিছু মানে টাকার কিছু ইস্যু আছে যেই যে আগে যে ছিল মানে একটু বাজেট বেড়েছে কারণ ইভেন টাইম যদি সময় মানে পার হয়ে গেলে সব জিনিসের একটু মানে রেট বেড়ে যায় অবশ্যই তো সেই কারণে এখন আমরা বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি এন্ড আমরা যে প্রবলেম যে এই প্রবলেমগুলো আমরা অলরেডি উপরে আমরা কমিউনিকেট করেছি তো আমরা বিশ্বাস করি মানে উই বিলিভ দ্যাট এই প্রবলেম মানে সলভ হয়ে যাবে আর কিছু যে টাকা যে
এক্সট্রা যে লাগবে সেটা ডেফিনেটলি মানে ফুলফিল হবে সেটা, কিন্তু আপনাদের একটু কিছুদিন মানে একটা জাস্ট একটা ডেট হতে পারে এতদিন। ডেফিনেটলি আমরা তো যেমন কনফিডেন্টলি গ্যারান্টি দিয়ে তো ডেফিনেটলি ওটা না কিছু বলতে তবে আপনাদের নির্মাণের আমরা একটা এক্সপেকটেশন থাকে, আমরা যে এক্সপেকটেশন বাই দিস ইয়ার আমরা মানে উই বিলিভ দ্যাট। Nagpur Police Commissioner Ravinder Singh Kalbra Wednesday te kuishi ki Arazeb Tom connection laga chamla opor choita FIR darj hoikina se aro chambin jari ase koikina Singh Kalbra kuishi Singal kuishi ki ekta Reuters group ra mahila constable ke molest kuishi aro alag mahila officers kangibi jokom baikina ase kuishi taibra kuishi ki idu ekto mastermind organization noholibi ekjun bra kura laga hobo pare aro idu mamla obor taikan bra chambin kuri ase kuishi Nagpur laga law aro situation to violence pra mante rati de biya hoi jaise holibi ichado control hoi jaise aro sensitive jaga khande curfew bhi lagai je kina ase koikina janai dishe जो है 6 FIRs रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस तरह में जो लिंक्ड हैं उसमें, तो जो 6 जो FIR हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है। देखिए क्योंकि ये 2-3 जगह पे था जैसे मैंने बताया, और एक स्ट्रेच के अंदर और कुछ अलग जगह पे, तो फोर्स अलग अलग फैली हुई थी हमारे कई अधिकारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी हैं उनको भी चोट लगी है, और उसका उनके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पूरी फोर्स जो है साथ में थी, तो ऐसा अगर है इंसिडेंट तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया कि चल रही है उसमें, पर ऐसा कोई सामने अभी तक, क्योंकि उसको चोट लगी थी उस बच्ची को, तो वो उसका इलाज और उसने फर्स्ट एड वगैरह ली है, तो अभी उसकी फर्दर उसकी स्टेटमेंट में पता चलेगा। हाँ, इसमें जो है हमारे DCPs जो हैं वो सुपरवाइज कर रहे हैं अलग अलग पुलिस स्टेशंस में। जो ऑफिसर्स हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वो अलग अलग हैं, क्योंकि 3 पुलिस स्टेशन में, एक में 3 FIR दर्ज हुए, एक में 2 है और एक में 1 दर्ज हुई है, तो इसमें हर एक पुलिस स्टेशन में अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स सब इन चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे हैं। सुबह इंसिडेंट हुआ, फिर ये हुआ, एक दूसरे एरिया में हुआ, तो इसमें कोई मास्टरमाइंड था या फिर किसी एक आदमी ने किया या कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे, ये सब चीज़ें, क्योंकि बाहर जो और हमको बाहर की एजेंसी से भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उसके आधार पे जो नेशनली कोई ऐसा नेटवर्क है या फिर यहीं पे कोई ऐसा मॉड्यूल है क्या, या कोई ऐसे लोग हैं, वो सब मैं आपको बता पाऊँगा। इसमें जो है 6 FIR 50 opor nishna manukan ke custody dil loishi aro 5 ta FIR darj kurikina se Maharashtra Nagpur city laga violence connection de koikina police commissioner Ravinder Singh Kalbra Tuesday tin koishe Central Nagpur de Monday sham de violence olaishe kude patrol khan police opor marishe koishe aro rumors hisab community laga holy book bi agitation homoy right wing body bra chulai dishe Mughal emperor Aurangzeb laga tomb hatai dubule hwabra Nagpur district carton minister Chandrasekhar Bawan Gulibra koishe ki social media khan July she itu chamela do biya kurubule nimiti aro opposition khan ke appeal kurise ki itu mamla do political nabonabi koikina Bawan Kulikun bra review meeting jo police commissioner aro district collector logot loise taibra bi sub communities ke appeal kurise shanti maintain kurubule nimiti घटना हुई है, उस घटना में अभी तक जो निष्पन्न हुआ है, इसमें 2 जो समाज थे, 2 गुट जो थे, उनके आपस में जो है झगड़ा हुआ, और इसमें सुबह जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ को जलाया गया था, और उसका जो है जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो दिखाया गया या देखा गया, और उसके बाद में जो है काफ़ी लोग जो है उन्होंने देखा, और इसके बाद में ये कुछ लोग, एक डेलीगेशन भी मेरे पास में आया था, जिस डेलीगेशन में ये बताया कि आप एक्शन लीजिए। इनफैक्ट इसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनके नाम से FIR दर्ज की गई, और हमारी कार्रवाई इसमें चालू थी, और लोगों ने उन्होंने बताया भी कि जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है, परंतु शाम के समय जो है दोनों ग्रुप
आमने सामने आए, क्योंकि कल अभी एक फेस्टिवल चल रहा है और कल एक जयंती भी थी, शिवाजी महाराज जयंती। तो उसमें जो है जब ये आमने सामने हुए तो वहाँ पे नारेबाजी हुई। एक किसी ने पत्थर मारा जो कि अनआइडेंटिफाइड था और उस समय पुलिस वहाँ पे थी, तो हम लोगों ने अपनी कार्रवाई की इसके अंदर। और इसमें जो है अभी तक 5 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और शांतता रहे पूरे शहर में, यही हम लोग आह्वान कर रहे हैं। और सभी से हमने ये भी बोला है कि आप सब लोग अफवाहों पे विश्वास ना करें, और आपको अगर कुछ इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है तो उसके बारे में ज़रूर हमें बताएं ताकि हम उनके ऊपर कार्रवाई करें। हमने सोशल मीडिया पे, वीडियोस पे और जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनके ऊपर भी हम Boxing Federation of India laga Secretary General Himanta Kalitage Tuesday din financial irregularities karni suspend kuri dishe. Idu investigation to former Delhi High Court Judge Sudhir Kumar Jain brakuri. Treasurer Digvijay Singh ke bhi shamil similar charges opor suspend kuri dishe. Investigation day unauthorized fund withdrawals, fraudulent billing aro power ke galat tarika bra istemal kuri. Kalita ke president post laga nomination day cooling off period limite reject kuri dishe taibra tuita consecutive 4 saal laga term serve kurise. Kalita kun first BFI laga treasurer takise taike returning officers bra ineligible declare kuri dishe. National Sports Court laga hisab te tuita consecutive terms pichide officials ke cooling off period tibule ulai jai. Kalita laga disqualification bichide presidential rest itia BFI president Ajay Singh, Vice President Rajesh Bandari aro Kerala laga D Chandra Rala ase. Idi ekla nohoigina Karnataka laga Sadish N laga Secretary General nomination ki reject kuri dishe. Aro Anil Kumar Bohidar ke Secretary General aro Treasurer laga post nomination day objection uthaise. Elections to 28 March day Gurugram day BFI's AGM homoy day hobo. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal bra Tuesday din Punjab Health Sector de badlav tangor ane ase kushe. Punjab Ludhiana de Kotakuria homoy Kejriwal bra koise ki apra Punjab laga sob busti de gym panai dibo aro youth kan drug addiction overcome kurigina health te dhyan dibo. Kejriwal aro koise ki Punjab de judi drug smuggler laga information paise kulidu 9779 100-200 de call kurubule Janda Khan की चुनाई से सेहत के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है पंजाब के अंदर। जैसा भी मान साहब बता रहे थे कि पिछले 1.5-2 साल हर क्षेत्र के अंदर प्लानिंग करने में बीता है। इसकी भी प्लानिंग करी, उसकी भी प्लानिंग करी, उसकी भी प्लानिंग करी। अब ये काम करने का, एक्शन का टाइम आया। आप देखोगे कि क्या क्या एक्शन होने जा रहा है। आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशे की समस्या है। पंजाब के हर पिंड में जिम बनवा रहे हैं ताकि बच्चे जिम के अंदर जाके अपनी सेहत और तंदुरुस्ती कर सके, नशे से बाहर निकल के वो जिम जाएं, खेल खेलें और अपना समय अच्छे से बिताएं। लगी हुई है पंजाब पुलिस ने, बहुत अच्छा काम किया है नशे के खिलाफ इस युद्ध में। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तक जनता पुलिस के साथ मिलकर काम नहीं करेगी तब तक काम नहीं चलेगा। एक फोन नंबर दे रहा हूं मैं, अगर आपको किसी को कहीं पे नशे की जानकारी है, कोई नशा बेच रहा है, नशे के तस्कर की जानकारी है, इस नंबर पे फोन करके या व्हाट्सएप करके बता दो, आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी। 97791 00200। जब हम 1 अप्रैल से जन आंदोलन भी शुरू करेंगे तो एक नशे का सेंसस करवाया जाएगा। पूरे पंजाब में घर घर जाके सेंसस करने वाले लोग हर घर जाके पूछेंगे आपके घर में कोई नशा तो नहीं करता। अगर कोई नशा करता है
तो उसके इलाज का भी इंतजाम किया जाएगा। तो पूरे पंजाब में ड्रग सेंसस करवाया जाएगा। इडिया मिकान खाता ब्रेक दा लोई नाइवो साइट गिवन Nltv। Welcome back. Araki News tonight. Andhra Pradesh Chief Minister and Chandrababu Naidu Wednesday in Delhi Day philanthropies around Microsoft laga co-founder Bill Gates ke lokwaishe. Ido homoi day Gates around Naidu artificial intelligence around predictive analytics laga istemal kurina healthcare, education, agriculture around employment generation nishna key sectors ke service delivery ke enhance kurle charcha kurishe. External Affairs Minister S. J. Shankar Wednesday tin koishe ki bishi desh de economic interest protect problemimiji tariffs aro sanction laga istemal kuriya se koishe. Raisina Tailuk te kota kuriya homoje taibra koishe ki itu measures to global affairs de ekta reality ho jaise. J. Shankar aro koishe ki economic tools jinika financial flows, energy supplies aro technology ke ichadu power laga instrument hisab de istemal kuriya se. Daibra emphasize krushe ki economic activities laga webinization do ita global relations laga significant trend hisa hoishe. Tade business laga pi bishi downward roll ase kushe. Now your point, tariffs, sanctions, what's happening, export controls. I think whether we would like it or not, they are a reality. Countries use them. In fact, if one looks at the last decade, I would say we've seen a much greater weaponization of pretty much any kind of capability or any kind of economic activity. It could be financial flows, it could be energy supplies, it could be technology. This is the reality of the world. Since I take the world as it is, we have to negotiate our way through that and see, how best we can do for our own country. Because at the end of the day, for a government, for a commissar of the government, you fight for your business. You fight for your business because you're fighting for your employment. You're fighting for your comprehensive national power, of which business makes a very important contribution. I think today the lines, dividing different domains have eroded. I think overall, if you see in international relations, I think it's a less restrained culture today than it was, say, a decade ago. And that's something we all need to factor in. Gaganyaan juntu India laga sobse poila human space mission ase itu karni junigina takya jarda astronaut ke training aro acclimatization homoide distraction bra bajaigina rakhibule nimiti public logo tour rakhishe koikina sarkar bra Wednesday tin koise ido astronaut kandu hoile group captain Prashant Balakrishnan Nayar Angad Bradab Ajit Krishnan aro Subhanshu Shukla kanase Union Minister Jitendra Singh bra Lok Sabha de koise ki media exposure ke kom kunpi daikan ke distract na kurule karni ase
Dai itubi kuishi ki Australia Subanshu Shukla Dusra Desh laga Australia logode International Space Station. Yes, sir. The honourable member has asked a question which must be bothering quite a few other citizens as well. And she is absolutely right. For the first time, 4 astronauts were identified who would possibly be part of the human mission. And one of them would also accompany the American astronauts and the other astronauts on their journey to the International Space Station. Their names have been notified, of course, for obvious reasons. The Honourable Prime Minister had the opportunity of meeting them also over there. Group Captain Naik, Group Captain Anand, Group Captain Angat, and Group Captain Shukla, who was earlier a wing commander. Now, Honourable Member is right that they have been kept out of the public glare for the reason that they were undergoing some acclimatization processes, some exercises, some training programs, and it was a view that giving them too much of exposure to the media and public might cause a distraction, which may not be in the compatible interest of all. And therefore, it appears to be so. At the same time, she is right. Why one of the names has come out forthwith? That is because of these 4, one had to accompany the mission to the International Space Station along with the astronauts from the other countries. And the chosen one was Wing Commander Shukla, who is now Group Captain Shukla, and that's how his name came to be little more widely known. And since he had the advantage. Meerut ekta Merchant Navy officer ke tailaga Maikia ro Maiki laga lover bra Chakubra Marigina Murai Tisha ro tailaga Kaudo Katigina Tram Pitor Simembra Plaster Kudisha Kukina Police Prejudice. Tailaga remains to recover Kurilusha ro accused to Junge Kirftar Kurilusha Kushe. Hatsado Intra Nagar de Tuesday Din Halaga se. Murijalaga Namdo Subanshu Rajput ase aro accused to Junaga Namdo Muskan aro Sahila se. Rajput laga family hisab Muskan ra taige mislead kurble nimje Rajput laga phone bra message putaishe kushe. Kalat kurigina Muskan aro Sahil to vacation nimje hill station de jaishe kushe. Rajput aro Muskan do 2016 de love marriage kushe. Daikan laga family sthan daijin laga relationship to Kushin abaigina takche to kani couple to Korean kurigina daijin laga teen sal chukri bacha logoti thaki thekishe. पुलिस जब मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल में हम पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई। CDS General Anil Chauhanbra Wednesday tin kuishe ki technology to ekta enabler hobo bare kintu manukanaga jaga kitabi lobole na pare bogushe da itubi kuishe ki intia to asymmetric threats laga samna kurese Rasina Tailukte ta interactive session homoi Chauhanbra Global War on Terror Day intia to bishish digna se do opode tai rakota bushe dai kuishe ki intia nimide sobse dangor sik to idu ase ki technology to khali ekta enabler hobo bare hole bi manuke replace kurule na parbo dusra sik to idu ase ki compact zones te shape kurule pare conventional conflicts se battlefield ke fire bra shape kure kintu idu ke se mindscape ke shape kurule lage landscape ke na hoigina third to twitter human or technical intelligence zaruri ase kuche has been facing this asymmetric threat or what you call as hyper this kind of a threat. We have called it always sub-conventional kind of a conflict. We invented this particular term much before West invented terms like global war on terror or asymmetric warfare or 4th generation warfare or now hyper conflicts. So we have called it a conflict which is below the threshold of conventional kind of conflict. And as far as the lessons are concerned, I think the biggest lesson is that there is no substitute for boots on grounds.
Technology can only be an enabler, but it cannot replace people. I think that's very important. Second important lesson is about shaping of the combat zone, actually. In conventional conflicts, you shape the battlefield with fire, actually. Over here, we are looking at shaping of the mindscape, not the landscape. So the battle of the minds becomes important as far as hybrid warfare is concerned. The third important lesson is about intelligence. That's intelligence is important, both human as well as technical intelligence. And we're not talking about the combat zone, but area around the combat zone also. This would be important. In such kind of an warfare, hybrid warfare, I think we should also look at close collaboration between the state government and the local police. So it's a kind of an whole of government approach, which is able to Chabanlaga Chief of Staff, Joint Staff General Yoshihide Yoshidabra, Wednesday in India Chabanlaga Rishta ke Tarif Kurishero, Ahya Samaje Rishta do Arobi Masput Kurble Vishwas Rakishe. Dai Koishi ki India ro Chabanlaga Beach Rishta do Bishik Days Prauchiase, especially General Johan CTS Logode first high level talks Rakya Bichide. Chabandu India Obor Parosa Se Aro Trida Days Laga Beach Masput Defense Corporation via Sekushe. Well, now the relationship, the cooperation between the Indian and India-Japan has been rapidly developing too. Especially the first is the high-level talks with General Chauhan, the CDS. We have the strong trust. It's the source of the defense cooperation of the both countries, and also we'll have the staff talks. There's so many cooperation agenda has been issued. So I think the Japan, the Indians bilateral cooperation will be the more strong in the future. Well, now. Iti tegishi Nagamese prime time laga khobor arenka news or updates kan pai thakibule sai thakibe Nltv.